वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम सैंपल पेपर ले रहे हैं सीबीएसई का, जो हाल ही में अपलोड किया गया है सीबीएसई की वेबसाइट पर। और टर्म 2 में आपका एग्जामिनेशन कुछ इस तरह से होना है कि इसमें 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स में से के आएंगे। और इन 4 में से 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के होंगे। और हर सेक्शन में, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होगी। तो टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका हो गया। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द एपी। तो आपको एपी दे रखी है 6, 9, 12 और 15। तो जैसा कि आपको पता है, द फॉर्मूला फॉर nth टर्म या nth term of an AP is given by a plus n minus 1 into d, where a is the first term, you all know this thing, and d is the common difference. D is known as the common difference. So clearly we can see a is 6 and the common difference is, you can see here, 9 minus 6. Everywhere the common difference is going to be same. So simply you find out the values of A25 minus A15. So you will say therefore A25 minus A15. Clearly we can see here A is 6 and D is, simply take two consecutive terms of this progression and you will find out the common difference, that is 3 here. So you will say A25 means A plus 25 minus 1, तो 24 हो जाएगा। A plus 24D minus A, I'll put a bracket here, A minus 14D, sorry, A plus 14D. So A plus 24D minus A plus 14D, plus minus becomes minus here, 14D. So A and A gets cancelled and A and minus A gets cancelled. 24D minus 14D, it becomes 10D, and clearly we know the value of D is, so therefore आप देख रहे होंगे 30 is the answer of this question. Answer is 30. Now इसमें एक इंटरनल चॉइस दिया है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ये है इसका चॉइस क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस पहले ही क्वेश्चन में दे दी गई। If 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 5th term. क्या दिया हुआ है कि 7th term का 7 टाइम करिए। 7 times of A7 is equal to 5 times the 5th term, that is A5. So you'll mention the formula here, you'll get the marks for this also, for writing the formula. If suppose your calculation goes wrong, at least you will get the mark for this one. Okay, so 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term. Find its 12th term. So simply what you will say, A plus 6D will be A7 here, this one, and multiplied by 7, equal to 5 into A plus 4D. So you will find out 7A plus 42D is equal to 5A plus 20D. If you solve it, you get 2A is equal to minus 22D. So you get A is equal to how much? Minus 11D. आपको मिला A is equal to minus 11D. आपको दो इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं A और D, लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशन तो आपको पता चल गया। तो इस रिलेशन से ही काफी है, आप कैलकुलेशन कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो आप A12 कहेंगे तो A12 विल बी A plus 11D. अब आप क्या करिए, A की जगह पर माइनस का 11D रख दीजिए, क्योंकि हमें पता है इस इक्वेशन से, है ना। तो व्हाट यू विल गेट, A12 इज इक्वल टू 0। आपको A12 मिल गया। हालांकि आप यहाँ पर A और D की सेपरेट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए हैं, लेकिन आप A और D के रिलेशन को जान पाए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, that again, I'll write the answer here also. Answer is 0. If any mistake is there in any calculation, you are free to contact me and inform me. Question number 2. Sorry. Find the value of m so that the quadratic equation mx into 5x minus 6 in bracket is equal to 0 has two equal roots. So first of all, you write it out in the form of, what you will say,
in the form of standard equation, isn't it? The standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a cannot be 0. Okay, so I have written this in this form, in the standard form, rather than I will say in standard form. So if I compare with standard form, I get a is equal to 5m and b is equal to minus 6m. तो if the equation has equal roots, अगर इस equation के क्या हो, equal roots हो, तो हमें पता है अगर equal roots होते हैं तो वो roots क्या होते हैं, roots are, then the roots are what? The roots are minus b upon 2a and minus b upon 2a. आप values put कर दीजिए, minus minus 6m divided by 2 into 5m. So what you get, m and m gets cancelled and 2 into 3 is 6, so you get minus 3 upon 5. The same thing you will get here also. So minus 3 upon 5 each. So minus 3 upon 5 will be the roots. मैंने यही चीज दोबारा यहाँ पर लिख दी क्योंकि यही कैलकुलेशन यहाँ पे आनी थी. ओके, rather than it should be plus 5 plus 3 upon 5 plus 3 upon 5 हो जाएगा ना. देखिए आप यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाता ना, अपॉन 2 into 5m like this. Okay, so this way you are going to get the answer. Let me do the correction here. It is 3 upon 5. Okay, then question number 3. Let us go to question number 3, again of 2 marks. From a point P, two tangents PA and PB are drawn to the circle 0, r. इसका मतलब ये होता है कि coordinates मतलब 0 is the center and r is the radius. Okay, and OP is equal to 2r. OP is equal to 2r. Find angle APB. This angle I have to find. ठीक हो गया. Now we know that tangents drawn from an external point, are equal in length. This is the theorem. So what you get, PA is equal to PB actually. तो एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट P और PB ड्रॉ किए थे, दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी. ठीक हो गया. क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल APB, इसका सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो गया कि ट्रायंगल APB, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये बात तो हमें समझ में आ गई. ओके, अब हम बात करते हैं एंगल APB को फाइंड करने का काम करते हैं हम. सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया. फाइंड एंगल APB. ये यहां से यहां तक 2r है बेटा. ठीक है, रेडियस जो होती है टेंजेंट पर, रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना. ओके, तो अब सेकंड पार्ट को करने के लिए अब आप देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस पोर्शन को, यानी कि इस ट्रायंगल को, this colored one, this triangle, I'm talking about this triangle. So what I am doing, this is O, this is your P and this is your A. हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर कांटेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है. तो ये आपका 2r है और ये r है. अगर आप यहाँ से देखें इन ट्राइंगल OAP, अगर आप देखें तो आप क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ एंगल APO, साइन ऑफ एंगल APO is equal to perpendicular upon hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, right? So from this what you get, sin of angle APO is 1 by 2. तो आप बता सकते हैं एंगल APO is what, एंगल APO is 30 डिग्री. किस साइन की वैल्यू 1 by 2 होती है, साइन 30 डिग्री की. तो एंगल BPO भी इसी तरह से 30 डिग्री हो गया. तो सो यू कैन से एंगल APB is equal to 60 डिग्री. एंगल APB will equal to 60. देखिए एंगल, अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ पर, I take another pen, if I take this one also, the same thing is going to happen here also. In this triangle also, this will be perpendicular, and here again
that is what perpendicular, that perpendicular upon hypotenuse kind of thing will be there. This also will come 30, this also is 30. So this is one other way of solving the question. So angle APB is, rather than I will write the answer here, angle APB is 60 degree, and triangle APB is isosceles also. This we have discussed earlier. Now let us go to question number 4. Okay, this is not so difficult actually this question, क्योंकि सेक्शन ए में दो मार्क्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे. The curved surface area of a right circular cone is 12,320. If the radius is 56 centimeter, then find its height. What is the curved surface area of cone? Is 12,320 centimeter square. ठीक, radius is given 56 centimeter. We have to find the height. Let us see how. Since we know curved surface area cone का क्या होता है, pi r l, slant height, pi r l. This is a cone. This is r. So clearly I will get l here. I will get the slant height here first. Slant height I will get from here. Once I get the slant height, then I am going to use the relation L square is equal to R square plus H square. From here you get H is equal to square root of L square minus R square. This is what you have to do. Pi RL is equal to 12,320. R value I know the value of R already. 56 into L. From this I am going to find out L here. If I am going to find out L here, so I will take this to the right hand side. It goes into multiplication. You know the calculation, 22 into 56. Now check whether this is divisible by 22 or not. This number 22 5 ja 22 5 ja is 110, remains 13, 132, 22 6 ja 132. Okay, so 560 times, then 56 cancels this by 10 times. So L is equal to 70 centimeter. So therefore I will say from here, I will say H is equal to square root of 70 square minus 56 square. 70 square is 4900 minus 56 square. You can find out 56 square 3136. So you get 4,900 minus 3136, that is 1764. So clearly H is equal to square root of 1764, and we know that the square root of 1764 is 42 centimeter. 1764, you know, how do you find? By long division method only. 4 4 is 16, remains 1 here. I am going to carry this whole pair, 64. Just make the double of this 8, then you see what unit digit whole square becomes 4 here. So it may be what it may be. It may be 2 rather than, we'll say, so 164. 42 is the answer. H is equal to 42 centimeter. So here the answer I am writing here.